Newcomer parents face many challenges and have many questions about their new homeland. It is essential that they are well informed and feel confident to make decisions about their child's schooling. The school is a valuable resource for cultural, social, and academic knowledge that can support the newcomer parent and child integration into Canadian society. Many families recognize that schooling in their home countries is significantly different than the Canadian school system. Initially, the differences may cause frustration, insecurities, and reluctance on the part of the parent to trust that their child is receiving an adequate education. Schools play a crucial role in ensuring that newcomer families are fully informed in all aspects of their child's education and are empowered as a result of this knowledge. This section describes some of the perceptions of newcomer parents and common concerns that have arisen, as well as the school's responses and attempts to inform parents and the ways parents utilize this knowledge. An area of concern for many parents is the issue of homework and academic assessment. 老学校，最多想的那就是，哎呀，怎么变化最大的是，怎么作业没有啦？学校孩子太空了，在家里啊，就是不是学校再给多一点作业啊？我甚至一开始跟那个老师谈过，就是说，是不是就是说给我的孩子，另外多加一点作业，有这个想法，但是事实上就是说都没有达到预期的，或者是我们的想法不对，或者是他怎么会？不过我的感觉就像你像我，也许他的话，我就完全赞成他的观点。那我也知道他的观点是正确，但是我就觉得就是在这个加拿大这个，特别是新移民刚到这个国家，他根本就不知道你的教育系统将会怎么样，或者是我刚来的时候就是像你说的，他的阅读就是作业，我孩子的老师也是这么说的。那是就是我们来是1年级半，就是到这里来上2年级的时候，他也是他就是拿着一个 book 教你每天换本书。我觉得就是说还要靠的就是说，因为你孩子在学校的时间，你家长根本就看不见。对，我觉得老师的负责和不负责是非常重要的。क्योंकि हमें पता नहीं होता कि स्कूल में यहाँ पे किस तरह से तालीम दी जाती है। जब हम तजुर्बा होता है, जब हम दाखिला दिलवाते हैं बच्चों को, एडमिशन दिलवाने के बाद ही हमें पता चलता है कि किस तरह की यहाँ पे तालीम दी जाती है, मतलब किस तरह पढ़ाने का क्या तरीक़ा है इनका। तो पाकिस्तान और इसमें तो बहुत ही फ़र्क है। यहाँ के इसमें यहाँ होमवर्क नहीं है। मैं बहुत परेशान रहती थी भाई ग्रेड 6 में। मैं तो टीचर के पास 2 दफ़ा गई, मेरे ख्याल में 1 दफ़ा आपके साथ हुई है बात और 1 दफ़ा बोर्ड की तरफ से आई हूँ, तो उनको लेकर गई थी मैं। तो मेरी बस एक ही बात थी कि होमवर्क जो है इसको क्यों नहीं देते आप, ग्रेड 6 में है और ये लेकर आता नहीं है होमवर्क। तो मैंने कहा कि नहीं, मैंने इनको असाइनमेंट वगैरह दिया होता है बनाने के लिए, तो वो ये है कि फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे भी समझ में आ गई कि पढ़ाने का यहाँ जो तरीक़ा है वो ये है कि बच्चों के ऊपर बोझ नहीं पड़ता और वो खुशी करते हैं और बहुत खुश होते हैं वो, और बहुत ही इजी महसूस करते हैं। और स्कूल भागने की तैयारी में सिर्फ स्कूल भागना चाहते हैं वो। और वहाँ ये है कि वहाँ रोते धोते थे, अच्छा जी छुट्टी हो जाए तो अच्छा है, आज छुट्टी हो जाए। तो ये कि 2 महीने की भी छुट्टियों में बहुत फील किया बच्चों ने अपनी क्लास को, स्कूल को। 所以就说耽误了那个孩子。那么我意思就是说让这里的就是说新移民的家长吧，就知道阅读就是作业。这一点我觉得，然后再说多给他 push， 因为你比方说像我现在女儿在 gift class，她和平时来说确实就多一些，就是有一些作业。但是你说不是说每天有很多老师就不大概做，他的感觉是做45分钟左右。那这样的话呢，孩子也觉得这个也很有趣，然后他觉得 busy，否则他觉得 boring， 天天上网，因为你是好像不 push 他，我天天就没事可做，那不就上网吗？实际上耽误时间了，对不对？我就玩游戏了。所以适当的给他 reading 一些，然后也给他一点点小作业，或者是生词呀，或者数学简单的这样，比方说乘法口诀表，我女儿在这个方面就很弱。那国内同样4年级的孩子，哎，非常的溜，马上说出来，对不对？可能2年级就可能说得特别好，但是4年级还想半天，对不对？所以呢，2方面揉合一下。Of course, because
the first thing they ask me is, do they have homework today? And then I would say, yes, we have spelling, and they have to try to study the spelling words, or we have reading. I would like them to practice reading, and then they would say, well, I can't help them because I can't read myself. And so you have to sort of explain to them that how the children can help themselves. So how to study, and how to study spelling, how to do their math, and where to get help if they cannot understand. For example, in our community we have all kinds of community support. We have the Ralph Thornton Center, for example, and the Riverdale Library. If they don't have computers, they can go to the Riverdale Library and use some computers for their projects. They have, they can go to Ralph Thornton Center. They have volunteers there to help with the second language learners. They also have programs for the new language learners. I have these papers that I sign them up to go to participate. Information about provincial testing is essential for newcomer parents to fully understand the motivations and reasons behind the assessment, as well as how it impacts their child's academic success. You have to keep trying. The frustration on the child's part, they were doing so well. The whole skill set they need to deploy is different than it is over there. And they were doing so well. And now they have to start doing well here. And they've got the parents looking over their shoulders, trying to use those old strategies. And they're really stuck. How do we give the parent, without getting involved in the parents' home life, how do we help them get control over the kids? Because if they're not going to learn it unless they watch TVO, they're not going to learn how to do it in our style. Yeah. Our parents expect a lot of sit-down homework. They want the kids to be sitting and working and writing. So if there is any kind of an academic problem or a learning problem, just give them more homework. Just give them more homework. So that seems to be something. They want the child to be working by themselves, just writing away. And Mary and I have had EQAO evenings, information evenings for the parents for the grade 3 and 6, the Ontario testing. And we have our biggest crowds for those because the parents are really so stressed about it. Really stressed, and they want their children to do well. And we emphasize that it doesn't affect their grades, it doesn't affect their standing, it doesn't affect really much of what they're doing at our part of the school. And they want to know about tutors, and a lot of them do have tutors, and they want to know about extra work that they can do with their child to bring them up to standard before the test. And so it's a great deal of stress on the child, a big emphasis for the family, because I guess at home there must be leaving exams or exit exams that children might have at the end of a grade. Or Yes. Information regarding the placement of students upon their arrival can be confusing for parents and may be detrimental to students' current and future academic pursuits. For example, markaan immigrant ahaan wadankan usoo galnay cunuga ma qabno iskuul la dhahayo cilmihii immigrantga loogu talagalay waxa lagu baro cunuga markuu habarta la soo gasho meeqa sano jira age-kiis meeqa waaye 8 sano jira 10 sano jira 2 sano jira age-ku yahay ee glasska fadhiisanaya macalinkii wax dhigi lahaa cunug waxa imaanaya glasski 10 sano jiro laakiin wax qori karin waxna aqrin karin afkiina aqoon wixii dhan hoosna soo dhaafay isla markii cunugii waxay ku ciyaarayaan recordka ku ciyaarayaan aqoontiisa hooseyso waa disability waaye label bay saareen cunugii future-kiisuna waa bisha ku baaba'aya marka waxa macalimiintu waxa waaye inay ogaadaan cunugan markii iskuulka la keenay intuu ka yimid recordkiisa inuu dib u fiiriyo waalidka dhala cunuga inuu la socdo marka intuu cunuga recordkiisa ugu ciyaaray oo cunugii iskuul qalad iyo class qalad la fadhiisan marka cunugii wuxuu u baahan yahay laga caawino marka board of education waxaan ka codsanaynaa ilmaha markay soo galaan immigrantga inay u furaan class special u ah ESL ilmihii lagu soo waxbaro kabacdi iskuulaadka caadiga ay ku yimaadaan ama macalimiintii ay waxbaraan ay yiraahdaan ilmahan immigrants waaye habkaasaa lagu caawinaya oo xiriirka loo sheego laakiin labadaas la dhex jirin ilmihii waa ku baaba'een marka ilmihii wada caadi oo caafimaad qabo waxaa lagu wada goro iskuulaadka iyo handicapka जी हाँ मेरा ये छोटी क्लासेस यानी ग्रेड 1 से लेके 8 तक जो है वो अच्छा रहा लेकिन 8 के बाद जो है वो मेरे बच्चों का 2 बच्चों का यानी काफ़ी लॉस हो गया। सबसे पहला मसला जो है वो यहाँ पर है इंटरप्रेटर का कि हमारी लैंग्वेज का मसला है कि वो लोग जो है ना हम लोग कुछ कहते हैं वो समझ नहीं पाते या हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते
तो ये सबसे बड़ा मसला है। फिर तो खैर इस तरह मेरे जो छोटे बच्चे हैं, एक जो 6 में थी उनका भी एडमिशन आसानी से हो गया, बहुत अच्छा रहा। अभी भी वो बहुत अच्छी पढ़ रही है वो बच्ची। और ग्रेड 8 वाली जो है वो हालांकि वो गई थी वहाँ पर ग्रेड 8 में, लेकिन उसको यहाँ पर भी 8 में ही ले लिया, यानी वो भी सेट रही। अच्छा, और इसके अलावा मेरे 4 बच्चे जो थे, 3 बच्चे वो वहाँ पर, 2 बच्चे मेरे 12 में थे कॉलेज में, एक बच्चा मेरा 10th में था। लेकिन वहाँ असेसमेंट वालों ने हमें वहाँ से असेसमेंट करके जिस स्कूल में भेजा वो अच्छा स्कूल था, लॉरियर, वहाँ पर भेजा। लॉरियर में हमारी कोई बात नहीं सुनी गई। तो लॉरियर वालों ने कोई भी बात सुनने से इनकार कर दिया और फ़ौरन वो जो हमें बॉर्डर स्कूल भेज दिया, जो बॉर्डर मेरे बच्चों के काबिल कबूल नहीं था, उनके माफिक नहीं था। जिसकी वजह ये हुई कि मेरा एक बच्चा जो है वो बददिल हो गया पढ़ने से। 6 महीने के लिए वो मतलब बिल्कुल स्टॉप कर दी उसने अपनी एजुकेशन। लेकिन अभी हम लोगों ने बहुत समझाया, बहुत बुझाया, तो उसने दोबारा से शुरू की। तो मेरा ये लॉस हुआ। लेकिन हाँ, तो बड़े बच्चों का, लेकिन ये छोटे स्कूलों में जो है ना, वो यहाँ पर बहुत अच्छा रहा। असेसमेंट वालों ने हमें जिस स्कूल में भेजा था उस स्कूल वालों ने हमारी बात ही नहीं सुनी, बल्कि उन्होंने और दूसरे स्कूल में भेज दिया। तो हम चूँकि यहाँ पर नए आए थे, हमें पता ही नहीं था कि कौन सा स्कूल ज़्यादा अच्छा है, कौन सा स्कूल मतलब थोड़ा सा लो है। तो बहरहाल उस वक्त हमने फिर भी हम दोबारा गए, हमारे हस्बैंड गए, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं की कि भाई हमने आपको फला स्कूल में भेज दिया है तो अब आप अपने बच्चों को वहीं कराएं, मतलब बाकायदा डांट कर। तो फिर वो मेरे बच्चे आ गए, हमारे हस्बैंड, और आकर ज़ाहिर है चूँकि हम यहाँ नए थे, हम ज़्यादा बोल भी नहीं सकते थे, तो हमारे यानी 3 बच्चों को 9 में ही एडमिशन मिल गया। Well, I wouldn't really say reluctant, but in my opinion, I see the parents in most cases are defensive in their points of view if they feel that there are problems with the kids' progress academic-wise. So, because what happens is mostly the kids back home are doing very well, and then they are coming into the Canadian education system, and there could be like a sister or 2 sisters, or a boy and a girl, and one of them is doing well, and the other one is not doing okay at all at the school, and then the parent comes and they are very upset, and they think that there is a lack of attention dealing with the issue, and their standpoint is if the kid was doing that well back home in school, then they should be doing as well here in Canada. And also the issue, the Canadian system, where it's based on age, not on grades. So basically the kid is placed at a certain grade and they are not able to cope with it, and there is no way they can sort of bridge the gap for them. Adding to this, sort of the cultural differences between like the school environment and the different expectations. Like the parents, they have expectations from the school based on the expectations back home, and the school have expectations from the parents based on the Canadian way, and they don't know that they are actually different expectations most of the time until there is a clarification. नहीं, यहाँ इसी तरह बोर्ड की तरफ से भी काफ़ी अच्छा इंतज़ाम इसी तरह जो नए आने वालों के लिए जो मेरा तजुर्बा, जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रेड 5 में जो था बच्चा, तो जैसे मुश्किल हो रही थी, तो उन्होंने बाकायदा वहाँ से एक ख़ातून आई थी, उर्दू ही थी, वो पाकिस्तान से ही ताल्लुक़ था उनका, तो और भी बच्चों का 2-3 बच्चों का और भी उन्होंने टेस्ट लिया था। तो इस तरह तो लेकर फिर उसके बाद वो टीचर भी काफ़ी उसमें तो बच्चों को ये देखते हैं, जज करते हैं कि इसके अंदर आगे बढ़ने की कितनी है सलाहियत और कितना ये मेहनत करता है, और देखते हैं कि होमवर्क ये लेकर आता है बिल्कुल एवरीडे बाकायदगी के साथ। तो वो इस तरह वो पूरे इसको देखने के बाद फिर वो फैसला करते हैं। फिर वालिदैन को इतनी मुश्किल नहीं होती, फिर वो खुद ही सारा कुछ कर देते हैं फिर। I had called his father at the start of the year, and he said his child didn't need special ed, he was going to work harder. And I find that with a lot of the immigrant parents, they right away say, there's nothing wrong with my child, he just needs to work harder. And trying to get across that
he was working hard and it just was not happening. So a teacher came in. And often the parents will say, oh no, I don't need an interpreter, I speak English okay. But in those cases where it's really important that I know that you understand, I call in an interpreter. But it is a barrier. One of the areas that we've had difficulty with the Somalian parents is, for example, the area of special education. Not wanting their children tested for special education. But, you know, and the reason being largely is because, well, what are you going to do with that information? Somehow that's going to negatively affect my child, and my child is going to end up in a lesser program or whatever. And so that we've done a lot of educating with parents, and we're now sort of starting to break through that wall, because parents are starting to understand when we say test your child, we want to test them to help them, to support them. Parents and students who have not had previous experience in the Canadian school system require specific information in regards to academic planning and course selection. Many mistakes can be avoided with the presentation and dissemination of appropriate information. मुझे उसमें दो डिफरेंस लगते हैं। पाकिस्तान में मैं समझती हूँ कि इतनी ज़्यादा इंटरेक्शन शायद टीचर से नहीं थी मेरी जितनी यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ टीचर्स मे बी देयर आर मोर विलिंग, चूँकि मेरा सिर्फ इसी स्कूल का वो है एक्सपीरियंस, एंड आई नो कि ये बहुत अच्छा स्कूल है, टीचर्स बहुत कुछ आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। लेकिन थोड़ा सा एकेडमिक वाइज जो हम सोचते हैं वो ये है कि वहाँ का हमें थोड़ा सा वी न्यू कि what's going on in the class. We had books, we had some sort of a syllabus, और हमें पता होता था अगर बच्चा पीछे भी जा रहा है तो instead of going to the teacher हम खुद उसको बैकअप कराने की कोशिश करते थे, क्योंकि we knew what's going on. यहाँ यह है कि since we don't have anything, neither do we have books, nor do we have any syllabus, anything, तो फिर ज़ाहिर है हमें टीचर के पास ही जाना पड़ता है। और यहाँ तक इस स्कूल का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो वो तो बहुत हेल्पिंग है, आपको वो बताते हैं हर टर्म के एंड में और इवन बीच में भी, अगर आप जाना चाहें तो बिल्कुल हो सकता है। इंटरेक्शन मीटिंग्स रख लेते हैं, जब दिल चाहे आप मिल सकते हैं। वहाँ मैंने ऐसा नहीं किया, आई डोंट थिंक सो, अपार्ट फ्रॉम के वो जो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन जो वो मीटिंग्स रखते थे, उसके अलावा आई डिडंट यूज्ड टू गो टू द स्कूल। तो दैट्स इट। Нет, просто мы, пройдя как бы две системы школ, думали, что здесь как бы та же система. То есть, честно говоря, даже не было мысли, что она очень по-другому построена. Настолько по-другому, что, в общем-то, ошибки вылились, к сожалению, очень поздно. То есть мы узнали очень поздно, что мы все сделали неправильно. Просто настолько была вера в систему, вера в учителей, вера в людей, которые принимают его в ребенка и несут ответственность за его будущее в данный момент, потому что как бы мы не обладали никакой информацией. И по прошествию 1,5 лет мы узнаем, что, оказывается, сначала все было сделано неправильно. То есть с нами никто не беседовал, нам никто не объяснил. И как-то это было так, ну, я не знаю, очень невнимательное отношение было, очень невнимательное. Как говорилось раньше, что если ты такой умный, почему ты такой бедный? Здесь люди не такие бедные, скажем так, намного богаче, чем в России. И тем не менее мы хотим, чтобы школа давала вот те знания, к которым мы привыкли, которые мы ожидаем от нее. И мы этого здесь не видим, и поэтому вот этот конфликт, который возникает, мы не видим его разрешения на сегодняшний день, действительно. Потому что программа составляется учителем, да, ребенок вправе выбирать предметы, нет вот этой целостной системы. И в конечном итоге то, к чему мы привыкли, мы не можем ему даже чаще всего в этом помочь. Потому что мы не знаем, как с этим бороться. Мы привыкли к одному, да, и мы не можем в эту систему уже вникнуть, мы не можем в нее проникнуть по одной причине, потому что мы уже сформировавшиеся личности. Вот, у меня есть опыт, скажем так, учебы в колледже, это заочное обучение, хотя это была full-time программа. То есть в моем представлении это было все-таки немножко другая система. И поэтому я уже смотрю на то, что происходит в high school, это в принципе то же самое. Нельзя детям в таком возрасте давать такую программу. Они к ней просто не готовы. В принципе не готовы.
Это моя точка зрения. मतलब बोलने का मतलब ये कि हमने मतलब ज़्यादा उनसे क्या बहस मुबाहिसा नहीं किया। हमें नहीं पता था यहाँ के लॉ का कि यहाँ क्या लॉ है, हमें किस तरह बोलना चाहिए, अपना बिहेवियर किस तरह रखना चाहिए। हमारी कंट्री में तो अगर ऐसा नहीं होता तो हम तो वहाँ पर मुक्के भी मार लेते, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कह दिया जी नहीं यहाँ पर नहीं है, आप फला स्कूल में चले जाइए। हम चुपचाप अपने बैग उठाए और दूसरे स्कूल में आ गए, जिसकी वजह से हमारे बच्चों को बहुत लॉस हुआ। और अभी भी मेरी बेटी जो है ना वो जाना चाहती है कॉलेजिएट में। उसने मतलब कॉलेजिएट के ही लिए हैं जो उसे नहीं लेने थे, लेकिन उसने इसीलिए लिए हैं कि एक्स्ट्रा अब दिसंबर में वो हो जाती, लेकिन उसे फिर ये 1 साल रुकना पड़ेगा अपने नंबरों की वजह से कि कॉलेज में जाए। तो ये लॉस हुआ हमारा सेकेंडरी में, लेकिन ये 8 तक हाँ सही है, बहुत अच्छा है। Вы когда говорили не называть учителей школу, я почему улыбнулась, потому что до сегодняшнего дня я не помню ни названия школы, ни имени одного учителей. Потому что я хочу сказать, что когда первый раз мы попали, я поняла, что это была... Я даже не знаю, женщина особо не представилась, она только назвала свое имя. И по истечению времени оказалось, что у моего ребенка неправильно были назначены предметы. Сейчас, то есть в 11 классе оказалось, что из-за того, что в 9, когда она пришла, ей неправильно были назначены предметы, сейчас ей придется брать еще 13 класс. То есть нам не объяснили ни систему школы, ни систему баллов, ни как это все происходит, потому что то, откуда мы приехали, совершенно была другая система. И всегда мы привыкли как бы верить учителям на слово, потому что человек, который занимает должность, он знает, что он делает. Ну вот мы сейчас столкнулись с очень большими проблемами. На сегодняшний день у нас не хватает 3 поинтов, 3 баллов, то есть нам придется брать еще 13 класс. 它有个大纲，另外的话呢，一个明显就是师资不足，就老师不够。那在中国，语文老师教完语文，夹着书就走了，去 office 可以去休息一会儿。数学老师上来了，讲完课45分钟下课了，休息了。体育老师来了。那么这里呢，这个老师非常难做。你看他工资拿得高，语文、数学、艺术什么东西都他一个人包干儿，而且从早上上班8点钟一直到下午4点钟，他就一个人跟这一群孩子在一起，再有耐心、再有体力的老师顾不过来。Resources for newcomer parents include community members, such as other parents, who have had similar experiences and understand the challenges faced by these families. horta waxa waaye dhibaatada naqabsatay daan Soomaalinahay waxa waaye hal mar baan soo galnay Canada oo dad naga soo horeeyay oo aqoon u leh oo systemka yaqaan ma jirin marka qof kala caawin karana habeeratay ma jirin marka hal mar baan waxaan soo galnay magaalo aan dhaqankeeda iyo caadadeeda iyo diinteeda waxaan ka garanayn marka waxaan kala kulannay dhibaatooyin badan qofkii hal xab English yaqaan xataa dhibaato waa saameeyay dhankaas uu ka saameeyay for example marka waxaan u baahnayn markaan soo galin wadanka inay mataqaanaa dawladda fiiriso habkii noo caawin lahayd si ay u sheegtay Maryan dad loo hargareeyo oo at least aqoon u leh oo dadkiisa dhibaatada ku dhici lahayd caawinaa marka waxa waaye dawladda dad nooma hargareen oo dadkii caawino farahay nooga qaaday marka ilmaheena way baabeen waalidkiina waxa ku wada dhacay depression iyo dhibaato iyo oohin ilmo badanna jeel badan bay soo ugu gashay horta hore 3 iskuul baan mahayga aadeen 3 iskuulna xiriir wanaagsan baan la yeeshay macallimiinta iyo principalada laakiin hal principal ma hilmaami karo waa high schoolka principalka jooga wuxuu ku dadaali jiray inuu waalidka ku soo dhaweeyo iskuulka wuxuu ku dadaali jiray inuu waalidka caawino marka dambe wuxuu soo saaray ilmihii markay soo galaan high schoolka special raggeena wiilasheena Soomaalida inay waxbarashada aad u hooseyso marka wuxuu yiri waxa hoosiyay dhibaatadan keentay inaan ogaadaan rabnaa waalida waxay yiraahdeen waxaan ka baqaynaa children aid society-ga inay naga qaataan ilmaha marka ilmaha canaano wuxuu noo bilaamiyay children aid society iyo waalidku isku keenay si waalidkii mataqaan u dhageystaan children aid society markay guriga soo gali karto markay ilmaha ka qaadan karto marka principal wuxuu ahaa principal aad iyo aad u wanaagsan oo markasta isku dadaalaya inuu xiriirka waalidka iyo iskuulka u dhijray hadduu community-ga iskuulka involved ku ahayn iskuulka ma soconayo markasta waxaan u baahanaa community-ga u baahanaa marka waxa waaye wax weyn buu ka qaatay这增加这方面内容我觉得第二点呢我觉得呢学校的老师虽然很忙但是我觉得以前我也听过有一些学校做得好的学校他们介绍的经验我听过一个 seminar 就是
一个 mentor program，在一些 North York 的可能一些学校，他们开展这样的 program，那么就是说每天早晨到学校上课之前15分钟，或者有一个老师会把学生叫在一起开一个简短的会议，把今天的什么东西要讲，然后呢下午结束之前再总结一下。这当然他们是叫 mentor program， 但是也不仅仅是这些。我认为呢，学校里可以怎么做更好呢？让任何一个新移民的学生，当然这取决于学校的学生的人数，新移民的学生的人数。他刚刚来这儿，找一个他的 peer student 做他的 mentor，或者是 higher grade 的学生呢做他的 mentor。我觉得这非常重要。然后就这样一个让他们做成一个 pair。那么让他们，比如说这个学生英语比较差，找一个高年级的英语好的学生帮他。比如说像我女儿，她的数学比较 strong， 她可以帮那个学生的数学，让他们自然而然的，学校要有组织的，作为校长学校做一个有心人，让他们结成一个这样一个 peer。那么甚至让双方的家长呢也能更多的接触。我觉得这一点呢，当然这可能是很多的工作 ，too much work for the school。就是说，刚刚来的时候，你要把大方向也能够你找到，而不是说很细节的，当然没有。就是你这个，就是说，一个就是说，每一个新移民来了以后，我觉得如果有一个很适当的条件，把大概的情况给介绍一下，或者是你找一个，就是说现在你老是没这个能力，或者是就是我们现在大家都说都很乐意帮助嘛，关键我们都不知道去帮助谁，你说对不对？就是说。如果是这种情况发生了，别人当初能跟我说一下，像现在他们能我早认识他们的话，我可能就走得很好的捷径，而不需要现在在讨论这个，就是说我觉得一个是移民的一个语言，我觉得还有一个是时间问题，还有一个就是说一个互帮互助的问题。我觉得中国人很希望帮助，或者其他族裔的很希望帮助，而你要把这个放在一个 council meeting 里面。就是说，你新移民一个是没时间去，对不对啊？还有一个你坐在里面也不知道他们说什么。真的在那个语言环境，你也不知道他说什么。我觉得就是很关键，就是怎么样恰到好处的帮助。像我们5年来，做5年的以后，我跟我5年来以前的英语，肯定听力上面也有不同。Schools cannot make the assumption that parents have the cultural knowledge and confidence to begin building relationships with their children's schools. In order to fully develop a relationship, both the school and the family must work together to establish a relationship that facilitates communication. आपका पाकिस्तान में जो तजुर्बा था उसका कुछ यहाँ असर हुआ है? नहीं, कुछ आपको महसूस नहीं हुआ? आपका जो था कि उन्होंने कहा ये बात सही है कि वहाँ पर इतना रब्ता नहीं होता टीचर से। अगर होता भी है तो कभी मेन ऑफिस में जाकर अगर कोई आपके कंप्लेंट करनी है या कुछ कहना है तो ऑफिस में जाकर प्रिंसिपल के पास कह के और चले आए। टीचर से डायरेक्ट रब्ता नहीं होता। या तो बजाय कभी अगर किसी का बच्चा कोई फेल हो गया तो शायद टीचर मतलब बात कर ले, वरना नहीं होता। लेकिन यहाँ पर जो है बहुत अच्छी तरह आपस में ताल्लुक़ रखते हैं स्कूल में जी, यानी छोटी क्लासेस में खास तौर से 6th ग्रेड तक जो है ना बहुत अच्छा राब्ता रखते हैं पेरेंट्स और टीचर्स आपस में, जिसकी वजह से बच्चे बहुत यानी कामयाब जाते हैं। One of the things that's helped me is my own background, my experiences with my parents, and that's why I make it a point whenever I contact the parent through the phone or in person, I make it a point of asking, what is your goal for the child? What is your dream for the child? And then I look at the child's, I ask the child, what do you want to be when you grow up? What are you good at? And then I make it a point, I sit down with the parent over the phone, I spend some time, or parent-teacher interview, explaining as to what is required for that position, what skills do you need. And if the child is not good at math, don't push him too hard into that. There are other things that he's good at, or she's good at, that they can explore, and very promising professions that he or she can go into. Not just being a doctor, not just being a lawyer or an engineer. So that helps a lot in terms of making that connection. And I think, when I say that parents need to understand, I think schools have a really, really important role and obligation to provide parents with forum or ability to gain the knowledge that they need. I don't think schools can make the assumption that parents, especially immigrant parents, have that knowledge. And so I think we have to provide opportunity for that to happen. I think that's part of our responsibility and part of our role. It is to put it out there and provide it, whether it's through workshops or newsletters or whatever it may be.
but to put it out there and put it out there in a form that is understandable to parents. So if there is a language issue, then that language issue has to be taken into account whenever you're putting that information out there. So I think schools have a real role to play, and again, I go way back to the beginning. It's a community thing, you know. There's that old African proverb that it takes a whole village to educate a child. Well, I guess I'd like to think that's what we're trying to put into practice here, and I think that there's a lot of truth to it. So I guess again, let parents know at the beginning of the school year what is expected of them, their rights and responsibilities. We know that they're new to the country, new to the system, but again, taking the first step to inviting them in. Schools' expectations of them, schools' expectations of their kids, making sure that they understand those, having a translator if the language is the problem. And again, introducing the teachers to them through parent-teacher interviews, teachers taking that step of phoning them in and saying, I'm your child's marketing teacher, I'm your child's English teacher, and please come in, I would love to meet you on the parent-teacher interview night, and having a translator there if, again, language is the problem. And I realize it's a difficult task to understand a whole new educational system and everything, but maybe the question that we need to ask is, what is the cost of not understanding it? And what is the cost of not learning to relate to each other? I don't think as parents anybody believes they're throwaway kids. And so if we sincerely believe that, then I think we all have a role to play in understanding, and there are always ways to gain that understanding and that knowledge, because knowledge is something that we all need if we truly want to help our children. So I think it's really important to gain the knowledge that allows you to participate in your child's education. I get to know more कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, बिकॉज वही बात आ जाती है कि यहाँ पे हमारे पास वो वैसा करिकुलम नहीं है जैसा वहाँ होता है. वहाँ हमें साल के शुरू में बुक्स, वी हैव गॉट दिस मच बुक्स, और हमें पता है कि बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या हमें पढ़ाना है. यहाँ पे वी डोंट हैव एनीथिंग लाइक दैट. ठीक है ना. तो इट्स मोर बेनिफिशियल फॉर यू कि अगर आप टीचर के साथ कांटेक्ट में रहेंगे, इवन इफ़ यू आर एन ओल्ड पेरेंट, अगर आपको यहाँ बहुत साल भी हो गए हैं, फिर भी आप ये ना सोचें कि अब आपका टीचर से इंटरेक्शन अगर कम भी हो जाएगा तो आपका बच्चा चल पड़ेगा. बच्चों के साथ ऑलवेज नए हों चाहे पुराने, आप टीचर से ज़रूर इंटरेक्शन रखें. उससे टीचर पे भी, टीचर हमेशा ख़ुद भी इस बात को यहाँ पे वो करती हैं कि आप मुझसे आके मिलें, ताकि वो थोड़ा सा आपके घर के एनवायरनमेंट के बारे में भी, और वो ये भी देखती है कि यू आर मोर इंटरेस्टेड इन द चाइल्ड. ऐसा नहीं है कि वो लेफ्ट आउट है कि माँ भी जॉब पे है, पापा भी जॉब पर हैं और no one is going to look after the kid. ऐसा नहीं होना चाहिए. Я хочу предложение такое ввести, как бы с чего начали, вернуться к нулевой точке, от которой мы пошли. Все-таки новоприбывшим родителям, это пожелание такое, дай Бог, чтобы всем было лучше, чем нам, скажем так, все-таки проводить какие-то семинары о системе школы, о том, что нужно для того, чтобы поступить в колледж, в университет, что это за система, как она строится, потому что на самом деле мы приезжаем, честь и хвала человеку, который посмотрел, большее количество нас не знают этой системы. И у нас конфликты на этой почве с детьми, потому что ребенок говорит, ты ничего не понимаешь, я говорю, как же так, у меня высшее образование, как же я не понимаю. Поэтому, может быть, тем же вайс-принципом и какие-то коллективные занятия для родителей, вот в полном смысле этого слова, чтобы родители находили со своим ребенком общие точки соприкосновения, потому что ребенок видит одно, мы знаем, что это должно быть другим. И, может быть, и встречи с учителями, именно учеба родителей о системе образования Канады. بفترته شو الخطوات اللي انتم اتخذتوها لتحسنوا هالموضوع هالعلاقة بينكم وبين principal؟ أنا if I was to go back أنا مش رح أجاوب directly على سؤالك، رح أقول لك إياه بطريقة تانية. If I was to go back وأصحح اللي صار I would make time مني أنا ومور efforts أكون بالمدرسة even لو كان على daily basis to support my daughter, be there for her.
because there wasn't anyone else for her. That's how we felt. We felt إنه she was neglected and our needs were not met by the administration of that school. We didn't understand it then because of our, difference in culture. أنا كتير فكرت بالموضوع. بتهيألي الحل إله إنه more meetings, more discussions بين الإدارة والأهل، أخذ وعطا. teachers نفسهم كمان. أخذ وعطا more meetings. ما بكفي meeting واحد للparents بالسنة لا يعطوا الجريدز وتدسكس الأكاديميك things. للنيو arrivals new cultures، مش النيو cultures، الcultures اللي بعدهم جايين جديد على البلد، حطوها under ESL، حطوها محل ما بدكم. بدهم more orientation. في ناس ما بيروحوا يدرسوا ESL they're okay in English. عرفتي كيف؟ فلازم مشان مصلحة الطلاب يضل في حوار مستمر بين الأهل والمدرسة. أيوة، يضل الحوار مفتوح، يضل في meetings under ESL إذا بدكم under مثل ما بدكم، بس يضل في حوار يفهموا بعض where these parents are coming from and where's the school coming from to narrow the gap.